Welcome to Career Choice 360, your best career guide for your best future. Today we are taking a closer look at NMIMS University, a well-known school for its wide range of higher education opportunities. If you are planning to be a student there or just want to know more about NMIMS, you are at the right place. Let's dive in. Established in 1981, the NMIMS University with its main campus in Mumbai is a part of SVKM group of institutions that is globally recognized for their commitment to the quality education and holistic development. NMIMS University is famous for its flagship MBA and BTech courses. Narsi Monjee Institute of Management Studies has a strong industry interface and a corporate relationship with over 1,348 companies. At present, the university has more than 17,000 full-time students and over 750 full-time faculty members. NMIMS offers a wide range of courses in disciplines like engineering, management, law, pharmacy, architecture, and more. Whether you are pursuing undergraduate, postgraduate, or doctoral studies, NMIMS provides a comprehensive learning experience. We will now cover the details of MBA courses with their eligibility and selection criteria. So let me tell you first, NMIMS offers MBA in 42 different courses. So for MBA and MBA in Human Resource, the eligibility is you need a bachelor's degree with 50% of aggregate, and the selection criteria is based on your NMAT score, the group discussion, and the personal interview. For MBA in law, you need a undergraduate degree in LLB, BLLB, BALLB, all the degrees related to law. And the selection criteria is written test, your NMAT or GMAT score, and a personal interview. For MBA in real estate, you need a bachelor's degree with at least 2 years of work experience in a relevant sector, and the selection criteria is your essay test and the personal interview. For MBA in healthcare management, you need a graduation degree in medicine or allied discipline, and the selection criteria is based on your merits and the group discussion or personal interview. Next, for MBA in Business Analytics, you need a degree in BTech, BCom, any bachelor degree in Mathematics or Statistics or Economics with a minimum of 50% aggregate. And the selection criteria is your NMAT score with the written ability test and the personal interview. So for fees जो है, fees इन सारे courses की आपकी range करेगी 6 lakh से 44 lakh के बीच में. डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर कहीं भी मतलब ऐसे क्लियरली अवेलेबल नहीं है, हर ईयर अपडेट होता है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं. तो अब बात करूं एडमिशन प्रोसीजर की, तो सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है. आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे. देन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी एंड अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. Next, we have the selection round. The selection round is based on your university level entrance exam or the national level entrance exam. Third, you have to appear for the personal interview round. So after entrance exam, if you clears the cutoff, then you are called for the personal interview. And अंडरग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन मास्टर्स के जो भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं, उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ में अवेलेबल है. एंड देन लास्ट स्टेप है आपका फ़ी पेमेंट एंड फाइनल एडमिशन. ये तब होगा जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे एंड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आएगा, मेल आएगा. सो उसके बाद आपको अपनी सीट रिज़र्व करनी है फ़ीस सबमिट करके, एंड जो फाइनल लेटर है वो पब्लिश हो जाता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो द सीट इनटेक फॉर MBA इज़ 990 इन NMIMS, एंड द कट ऑफ फॉर MBA इन NMIMS is generally above 220. Let's talk about the placement highlights. So the highest package of 2023 in MBA Core International was 67.80 lakh per annum, and in MBA HR it was 25.95 lakh per annum, and in MBA Technology it was 22.40 lakh per annum.
एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 2023 की हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग MBA कोर का जो एवरेज पैकेज रहा था वो 26.63 लाख पर एनम था एंड MBA HR के लिए 19.56 लाख पर एनम एंड MBA टेक्नोलॉजी के लिए 10.55 लाख पर एनम। टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो NMIMS मुंबई की प्लेसमेंट की 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके टॉप रिक्रूटर्स थे एक्सिस बैंक, KPMG, जिंदल स्टील एंड पावर, IBM, डेल, JP Morgan, डेलॉयट एंड मैनी मोर। रैंकिंग्स की बात करूँ तो इंडिया टुडे की रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग NMIMS को 10th आउट ऑफ 272 कॉलेजेस इन इंडिया की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट NIRF की रैंकिंग की बात करूँ तो NIRF ने 21st रैंक पे रखा है NMIMS को 125 कॉलेजेस के बीच में। एंड आउटलुक की 2021 की रैंकिंग्स की बात करूँ तो 4th रैंक पे NMIMS को रखा गया है 119 colleges. So it was all for today. I hope this video helped you to know the NMIMS Narsimunji Institute of Management Studies better. Comment down your queries and questions. Suggest me the next college to review. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Press the bell icon for all career related updates because career clear, so no fear.